डेरिवेटिव रो आमे प्रीवियस क्लास रे डिस्कशन करथिले जे पैरामीट्रिक इक्वेशन रे डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन रो डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव रो लास्ट आर्टिकल एटा डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन with respect to another function. How to differentiate a function with respect to another function. For example, suppose differentiate x to the power 3 with respect to x to the power 2. आगुरु जो डेरिवेटिव गुडा हम सब करूथले with respect to x थिला, but here we differentiate a function with respect to another function. In this case, first you take y is equal to x cube. Here z is equal to x square. Then you have to find dy by dx, that is equal to 3x square. जेमिति डेरिवेटिव करथलो सेमति करा हबो, खाली सेपरेट डेरिवेटिव कर दबो। y और z रो सेपरेट डेरिवेटिव करा हबो। So then dz by dx equals to 2x. Then you have to find dy by dz, that is equal to dy by dx divided by dz by dx, that is equal to 3x square by 2x. Simply 3 by 2x. This is the result. So differentiate with the function with respect to another function. You take first function as y and second function as z. Then you have to find dy by dx and dz by dx. Then you divide them. That is the result 3 by 2x. Another example. The बहुत easy अच्छी 7i. तमर textbook रा एटा 7i. Differentiate sin inverse 2x by 1 plus x square with respect to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. So first function is sin inverse 2x by 1 plus x square. Second function is cos inverse 1 minus s square by 1 plus x square. First you take y as sin inverse 2x by 1 plus x square and second function as z is equal to cos inverse 1 minus x square by 1 plus x square. You take separately y and z. First function as y and second function as z. Then you have to find the derivative of y, also derivative of z separately. Then you divide. Just a technique. बहुत easy technique. So dy by dx equals to, then you have to put here, so first you have to simplify this function. You know that put x is equal to tan theta here. Then sin inverse 2 tan theta by 1 plus tan square theta. That is sin 2 theta. So sin inverse sin 2 theta. That is equal to 2 theta. 2 theta means tan inverse x. Then you have to find dy by dx. Since it is a inverse function, first you have to simplify it. Then you have to difference 2 sin tan inverse x. That is easy. 2 is constant and derivative of tan inverse x is 1 by 1 plus x square. This is dy by dx. Here you have to simplify z also. So that is equal to cos inverse 1 minus tan square theta by 1 plus tan square theta. That is equal to cos inverse cos 2 theta. That is equal to 2 theta. It is also 2 tan inverse x. Then you have to find dz by dx. That is equal to 2 by 1 plus x square. You have to take differentiation separately just. As like आगुरु जेमिति डेरिवेटिव करथलो सेमति करिवो, केवल सेपरेटली करिवो, y रो z रो सेपरेटली करिवो. Then you have to find dy by dz. That is equal to 2 by 1 plus x square divided by 2 by 1 plus x square. That result is 1. So that is a simple article, but
इट इज बहुत इंपोर्टेंट किंतु परीक्षा पई कारण गोटे क्वेश्चन आसे 4 मार्क का क्वेश्चन सबले काउंसिल ले हाउ टू डिफरेंशिएट ए फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन एटा तुम बहिरो 7i रे अछि तो डेरिवेटिव रो सब टेक्निक आज सरी गला डेरिवेटिव बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन how to differentiate by using law of implicit function derivative of parametric equation and derivative of a function with respect to another function तो एटा तुम बहिर 7i रे अछि टेक्स्ट बुक रो आपरे तुमको 7k करि दबो 7k टा गुटे बड़ एक्सरसाइज तो 7i आउ 7k ए दिटा टास्क करिवो बहुत टास्क अछि कंप्लीट करिया पई 7k इज मोस्ट इंपोर्टेंट कारण काउंसिल ले 7k रु ही सब एक्सरसाइज आसे लॉन्ग क्वेश्चन गुटे आसे 4 मार्क का क्वेश्चन आसे तो 7k आउ 7i नेक्स्ट आउ गुटे टास्क दे दबा डेरिवेटिव ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तुम कोर्स रे अछि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव second order derivative second order derivative ए पर्यंत आमे जो सो डेरिवेटिव करथले दैट इज फर्स्ट ऑर्डर मींस dy by dx दैट इज फर्स्ट ऑर्डर नाउ यू हैव टू फाइंड d square y by dx square दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जेमिति डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर करथलो काढिबो ताको आउ थरे डेरिवेटिव कर देले सेटा हिजबो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सपोज y इज इक्वल टू x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 then dy by dx equals to we know that एडा हो 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 that is first order derivative एडा को हमें कहू y डैश भी कहि पारू y1 भी कहि पारू आगो आउ धारे डेरिवेटिव कोने हम y2 यूज करू किबा y डबल डैश किबा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दैट इज dy dx ऑफ dy by dx दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आमा कोर्स रे अप टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर्यंत अछि तो एटारु भी मध्य क्वेश्चन आसी परिबो तो एटा को आउ थारे डेरिवेटिव करिबा दैट इज 6x + 6 एटा होची सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत इजी आर्टिकल डे आराम रे करि होबो एटा हला 7l 7i 7k 7l ए तीनटा एक्सरसाइज कंप्लीट करिवो 7i 7k 7l माउ किछि एग्जांपल करछि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव रो सपोज x is equal to a cos q theta y is equal to a sin q theta find d square y by dx square और एटा को मध्य कहा जाए y डबल डैश और y2 भी कहा जाय पारे एका सब नोटेशन एका तो हाउ टू फाइंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव दिस इज ए पैरामीट्रिक इक्वेशन because x is the function of theta also y is the function of theta here theta is the parameter so first you have to find dx by d theta a is constant derivative of cos q theta with respect to cos theta again cos theta with respect to theta a is constant cos q theta with respect to cos theta is 3 cos square theta into cos theta रे डेरिवेटिव वाला minus sin theta this is dx by d theta then you have to find dy by d theta dy by d theta equals to a is constant derivative of sin q theta with respect to sin theta again sin theta with respect to theta that is a constant sin q theta रहला 3 sin square theta into cos theta separately you have to differentiate as parametric equation सिखा हैतला सही मेथड रे separately derivative कर दबो then you have to find dy by dx that is the first order derivative
that is dy by d theta divided by dx by d theta, which is equal to 3a sin square theta into cos theta by minus 3a cos square theta into sin theta. 3 cancel, a cancel, sin square theta sin theta cancel hela pare minus sin theta by cos theta, that is equal to minus tan theta. That is the first order derivative. But we have to find the second order derivative, that is d square y by ds square or y double dash or y2. एका नोटेशन आइदर आम एटा यूज करि परिया नन एटा एटा को जे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. Then you have to find d square y by dx square, which is equal to d by dx of dy by dx, that is equal to d by dx of minus tan theta, because dy by dx is minus tan theta, which is equal to minus sec square theta into d theta by dx. You have to multiply here d theta by dx. एटा को पिला माने भूल कर दियंती, छाड़ दिया जंती खाली माइनस tan theta ताको आउ थरे डेरिवेटिव करने पिला भाबी दियंती माइनस sec square theta. But here the function is theta, we have to differentiate with respect to x. So first you differentiate minus tan theta with respect to theta, then by chain rule you have to differentiate theta with respect to x, that is equal to minus sec square theta into, here we have find dx by d theta, ताको रिवर्स कर दबा, that is होबो d theta by dx, that is equal to 1 by minus 3a sin theta into cos square theta. You have to multiply here d theta by dx, otherwise एटा भूल ही जीवो. एटी पिला माने छाड़ दे जानती खाली माइनस tan थीटा ताको आउ थरे डेरिवेटिव कर देने भाबी दियंती sec square थीटा, बस ओवर कर दियंती. बट हियर द फंक्शन ऑफ थीटा एंड यू डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, सो फॉर दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई d थीटा बाय dx. तो दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जिवो 1 by 3a sin theta into cos 4th theta, or that is equal to sec 4 theta into cosec theta by 3. एटा भी ठीक जोटा रखले भी हबो. एटा होची पैरामीट्रिक इक्वेशन ला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. आउट प्रॉब्लम करिवा, एटा बहुत छोटिया आर्टिकल टे आ 4 मार्किया क्वेश्चन आसीबार पॉसिबिलिटी अछि काउंसिल परीक्षा रे. तुमको तीनटा x k7l, then आमर डेरिवेटिव ओवर हो जिवो. नेक्स्ट जिबा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की. सपोज द फंक्शन इज y is equal to sin inverse x रो होल स्क्वायर, then prove that 1 minus s square into y2 minus x into y1 minus 2 equals to 0. এই টাইপ র क्वेश्चन भी आसी पारे. y2 means the second order derivative, y1 means first order derivative. तो you have to differentiate. फोन आसुटी କଥା हे हम प्रूफ. এই টাইপ র क्वेश्चन भी आसे काउंसिल परीक्षा रे. बहुत ट्रिकी क्वेश्चन, बहुत गुडा को प्रैक्टिस करिया पड़िबो. आरडी शर्मा बही रे भी अछि. तो डेरिवेटिव रो सब टेक्निक आज सरियला फर्स्ट ऑर्डर एवं सेकंड ऑर्डर बहुत गुडा टास्क हबो. तो टाइम अछि वर्तमान तो खटी परिबो. मु भाबुची हम ए भितरे बहुत किछि आगे जिबा. तो पिला माने जहा किछि प्रॉब्लम हबो तुम ग्रुप रे जणेबो, मु ताऊ सॉल्व कर देबो. y is equal to sin inverse x रो whole square. Then you find, first you write differentiate with respect to x, that is y1 first derivative means dy by dx equals to 2 sin inverse x by chain rule answer into 1 by 1 minus s square root over.
or this implies y1 into 1 minus x square root over equals to 2 sin inverse x. Then squaring both sides. Squaring both sides. y1 square into 1 minus s square equals to 4 sin inverse x whole square. You have to eliminate this sin inverse x. Instead of sin inverse x whole square, you can write y. Because हमको जो प्रमाण करिया को दिया है जी एठी एई फंक्शन ला किछ नाही त सब y टर्म रे आनिबा तो दैट इज इक्वल टू 4y y1 square into 1 minus s square equals to 4y. This is the first order differentiation. Next, differentiate with respect to x. Again differentiate with respect to x. तो हमको प्रोडक्ट रूल यूज करियो पड़िबो y1 स्क्वायर ता डेरिवेटिव होबो 2y1 into y2. y1 स्क्वायर मींस dy by dx रो होल स्क्वायर आको आउ थरे जदी डेरिवेटिव करा जाय एटा हबो 2 into dy by dx into d square y by dx square. That is equal to 2y1 into y2. y1 means dy by dx, y2 means d square y by dx square. तो 2y1 into y2 1 minus x square प्रोडक्ट रूल अनुसार एटा को रखा गला प्लस y1 स्क्वायर 1 minus x square डेरिवेटिव हला minus 2x equals to 4y1. Derivative of y with respect to x is dy by dx, that is y1. Then you cancel 2y1 on both sides. y2 into 1 minus x square 2y1 सब आड़े अच्छी cancel कर दबा y2 into 1 minus x square minus x into y1 equals to 2y1 equals to 2 only because 2y1 सब cancel है जी. So this implies y2 into 1 minus x square minus xy1 minus 2 equals to 0. बस this is the result. तो एई टाइप रो टेक्निक रे किछ अंक प्रैक्टिस करिवो तो तमरो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आज कंप्लीट हेला. तुमको टेक्स्ट बुक रो 7i 7k 7l ए तीनटा एक्सरसाइज कंप्लीट कर परिबो आज.